welcome learners. Up to now, we have understood what is communication, what is the process of communication, why do we communicate, and what are the main elements in a communication process. The process of communication involves various elements, and the coordination among those elements is as necessary is the completion of the process of communication. In the process of communication, we face various kinds of barriers that may hinder the process of communication or may affect the effective communication, meaning thereby they may affect the communication effectiveness. The basic purpose of communication is to create a mutual understanding. But during the process of communication, if somehow the message, the sender, the medium, or the receiver could not get the message or could not channelize the message, the communication effectiveness is affected. What are these kind of factors that may affect? These are called barriers to effective communication. Sanchar Badhaएं. Before understanding barriers to communication, let us understand what is effective communication. Effective communication is when the communication achieves its desired aim, meaning thereby the receiver understands the message as is conveyed by the sender. अर्थात संचार प्रभावी तभी माना जाता है जब जिस प्रकार से संचारक जिस संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है, प्राप्तकर्ता भी उसी भाव से उसी संदेश को उस प्रकार से ग्रहण करता है, तब उस संचार को प्रभावी संचार माना जाता है. Now let us understand various barriers to effective communication. Barriers refers to any kind of obstacle which hinders the smooth flow or the process. As we know, communication is a process. The process could be effectively accomplished with the coordination of all the elements. कौन-कौन से elements? Sender, message, channel, receiver, etc. In communication, there are internal as well as external factors which may create obstacle in the flow of communication. Also, they may occur at any time in the whole process of communication. There are a variety of barriers which may affect the process of communication or successful completion of the communication process. One should be aware about the communication barriers and the ways to avoid the effect of such barriers. Broadly, the communication barriers could be categorized into two categories. First is physical barriers and second is psychological barriers. अर्थात भौतिक बाधाएं या फिर मानसिक बाधाएं. Let us further understand the types of communication barriers on the basis of these two broad categories, that is physical barriers and psychological barriers. जब हम संचार करते हैं तो कई प्रकार की भौतिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि सराउंड साउंड या जिस टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी वर्किंग अफेक्ट हो रही है, या फिर रेंज इशू बहुत ज़्यादा अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात करें, etc. And
there may also be barriers in the psychological processing of communication at the ends of sender and receiver. मतलब जब संचार शुरू हो रहा है या संचार जिस तक पहुंच रहा है प्राप्तकर्ता तक, तो उस दौरान भी संचारक और प्राप्तकर्ता के मनोस्थिति के अनुसार कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. So let us discuss physical barriers in communication. Physical barriers include external sounds, time shortage, competing stimulus, environmental disturbances, health issues, technical issues, etc. External sounds means बाहरी आवाजें. Time shortage अक्सर जल्दी जल्दी में कोई बात कहे जाना. Competing stimulus कुछ और चीज कम्युनिकेशन के लिए सेंडर को प्रेरित कर रही हो. Environmental disturbances सराउंड एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ, जैसे घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, बिजनेस के बाहर या इस तरीके के आसपास के वातावरण में कुछ घटनाएं घटित हो रही हों जो कि संचार की संदेश को पहुंचाने में प्रभावित करती हूँ. हेल्थ इश्यूज, सेंडर एंड रिसीवर केसेस, टेक्निकल इश्यूज. एंड psychological barriers include all those barriers which could psychologically affect communicators. For example, language barriers, emotional barriers, listening barriers, health issues, self-image, resistance to change, demographic conditions और differences. मतलब जब हम संचार करते हैं तो भाषाई बाधाएं, भावनात्मक बाधाएं, सुनने की क्षमता या एक्टिव लिसनिंग ना होना, केवल सुनना, हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी व्यवधान. कई बार अक्सर हम सुनते हैं लेकिन वास्तव में सुनते नहीं हैं, उस बात को ग्रहण नहीं करते हैं. रेजिस्टेंस टू चेंज, मन में जवाब देने की प्रवृत्ति रहना बजाय सुनने के. डेमोग्राफिक कंडीशंस मीन्स कोई 70 ईयर्स का 10 ईयर्स के पर्सन से बात कर रहा है, देयर मे बी डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन, और लाइक somebody from north is communicating with someone from south, so regional conditions, there may be cultural aspects, there may be etc. So in addition to physical barriers and psychological barriers, various more categories of communication barriers have also been described, but mainly these come under these two categories. Either a communication barrier may be physical or may be psychological. Let us take an example. Suppose A and B are communicating over phone. One instance may be when A was sending the message, A के आसपास कुछ साउंड्स हो रही थी, तो B फोन के उस तरफ उस बात को अच्छे से नहीं सुन पाएगा. या फिर A ने बहुत जल्दी जल्दी बात कह दी तो भी B उसको जल्दी से नहीं समझ पाएगा. A जब कॉल कर रहा है B को, साइमल्टेनियसली A किसी से SMS कर रहा है या B किसी से SMS कर रहा है, उसका रिप्लाई कर रहा है. Environmental disturbances may be A and B both parts, health issues may be, technical issues may be कि नेटवर्क ही कट रहा था बीच बीच में, तो A ने जो कहा B ने आधा आधा सुना. Also, if we consider the example of psychological barriers, suppose A started talking in English, but B was not comfortable in understanding English language, so the language barrier arose. A and B could not understand what the A wanted to communicate to B. इमोशनल बैरियर्स, जब ए बी से बात कर रहा था तो बी किसी और भावना में था या ए किसी
और वजह से अफेक्टेड था, तो दोनों एक दूसरे की बात को उस समय उस कंटेक्स्ट में नहीं सुन पाए. लिसनिंग बैरियर, इट मे बी कि ए इज बोर्ड विद बी, और बी जो कुछ भी कह रहा ए ने उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुना, या किसी और कारण से बी ने ए को ध्यानपूर्वक नहीं सुना. हेल्थ इश्यूज, सेल्फ इमेज, etc. Such kind of issues may arise while communicating. So now the question arises, how to avoid? How to avoid these barriers in any communication to make your communication effective? Very basic thing is, if you know about these barriers, that these kind of barriers may occur, you will be very precautionary in drafting your message, in encoding your message. कैसे? अगर आपको संचार बाधाओं का पता है, के बारे में जानकारी है कि इस प्रकार की बाधाएं आपकी संचार प्रक्रिया में उत्पन्न हो सकती हैं, तो बेहतर है आप पहले से ही उन चीजों को जांच लें, जितना हो सके उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें. बिकॉज सी, these are internal and external factors. Some are in control, but some are beyond control. Sender cannot control on the mind of receiver. Receiver cannot control the mind of sender. So psychological barriers को control करना बड़ा मुश्किल है. But with a little efforts you can do it. Like physical barriers, आप पहले से जांच लें कि आसपास शोर ना हो. यदि आप किसी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, if you are employing any technology, check if it is working properly or how long it could work. So accordingly limit your message. And in terms of psychological barriers, आप पहले से ही अपने रिसीवर के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, जान लें. अगर आपको पता है कि आपका रिसीवर किस भाषा में कंफर्टेबल है, किस समय बात करने में कंफर्टेबल है, इस तरीके से अगर आप अपने रिसीवर टारगेट ऑडियंसेस को थोड़ा सा समझ लें, सो वाइल कीपिंग देम इन योर माइंड ड्राफ्ट योर मैसेज, तो क्या होगा, आपका मैसेज अच्छा बनेगा और कम्युनिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो पाएगा. In addition to this, suppose like these language barriers, emotional barriers, listening barriers, health issues, etc. अगर आप अपने मैसेज को उतना एट्रैक्टिवली एनकोड करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं कि लिसनर, रिसीवर उससे ध्यान हटा ही ना पाए, then also your communication will be effective, because the listener will be listening it actively participating in the communication. Participation from sender and receiver both is essential in any communication to make it a effective communication. So these were the types of communication barriers, and how could you avoid or avoid the effect of these barriers on your communication. These skills to make your communication effective are called communication skills. How to draft your message, how to pass your message, how to choose particular media, how to present yourself, how to engage your receiver, etc. These all are communication skills. So it is as necessary to know barriers of communication as necessary is to make effective communication. So these were the barriers to communication. Although by following some important considerations, one may avoid these barriers of communication by understanding your audience, by properly drafting your message, by choosing the appropriate medium, etc. Thank you. So today we discussed about barriers to communication. In the next video lecture, we will discuss some more aspects of communication skills that will help you to make your communication effective. Till then, stay home, stay studying and stay safe.